हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है बेटा, हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। कल अपन ने डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर दिया था, एक्सरसाइज 9.1 भी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। कि बाबा ये डेरिवेटिव्स यूज कहाँ होता है ना, वेयर डू वी यूज इट। अब ज्यादा करके अपने को इसमें एक कॉमर्स वाले एप्लीकेशंस चाहिए। ओके, तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द सप्लाई एंड डिमांड आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दे आर द मोस्ट फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। बराबर, सप्लाई एंड डिमांड इज द बैकबोन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। ये ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। सप्लाई क्या है बेटा? हाउ मच कैन a market offer. सप्लाई क्या है बेटा? हाउ मच कैन अ मार्केट ऑफर। एंड डिमांड क्या है बेटा? कि कितना वो अपन बेच सकते हैं मार्केट में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके ओके, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आर द कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है बेटा? द नोमेनक्लेचर इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले डिमांड फंक्शन देखेंगे बेटा। व्हाट इज दिस डिमांड फंक्शन? वी नो दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डू यू एग्री? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होगी बेटा? डिमांड कम होगी। और जैसे ही डिमांड प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल बाय किसने किया था बेटा? मार्शल ने, राइट? तो because demand is a function of price, we can write D is equal to F of P. D is equal to F of P. Correct? The next one is the marginal demand. अब marginal demand क्या है? Demand तो पता है अपने को, उसमें से अभी marginal demand क्या है? It is the rate of change of demand with respect to price. क्योंकि demand ये price के ऊपर dependent है। ओके, तो rate of change of demand with respect to price is called as the marginal demand. In simple words, marginal demand मतलब if the price is increased by 1 rupee, what will be the effect on the on the demand? So marginal demand is nothing but the derivative of demand with respect to price, that is f dash of p. Okay, supply is also a function of price. जैसे price बढ़ेगा supply बढ़ेगा, जैसे ही प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पी। एफ के बजाय यहां पर अपन ने जी लिखा है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मार्जिनल सप्लाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मार्जिनल सप्लाई इज द डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। करेक्ट? ओके, दैट इज जी डैश ऑफ पी। अब यहां पर अपन इधर लिख के लेंगे। फर्स्ट, marginal demand, we will denote it by dm, derivative of demand with respect to price. D is the demand and p is the price. Marginal supply is what? Yes, supply. It is also derivative of supply again with respect to price. तो यहां पर common क्या है बेटा? Yes, the common is the price. Both are dependent on price, so we differentiate it with respect to price. इसको अपन क्या लिखेंगे? f dash of d, इसको बोलते हैं अपन f dash of s। आप बोलेंगे उधर तो उसने g लिखा है बेटा, it is just to denote a function. ओके, और ये f है और ये g है, they are separate functions। ये बताने के लिए उसने f और g लिया है। I hope it is clear. नहीं तो you can comment. Now the total cost function. Total cost क्या है? The cost function is the formula, mathematical formula to express the production expenses. What are the different types of expenses which we occur during the production of the certain number of goods which are to be produced? तो cost is a function of x. x क्या है? x is the number of goods present. तो cost किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? Yes, the number of goods which are produced. Marginal cost again क्या आएगा फिर अभी? Now because cost is a function of number of items produced, तो
मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स. तो ये क्या आएगा? देखो बेटा, थर्ड मार्जिनल कॉस्ट, marginal cost CM, it is the derivative of x with respect to derivative of cost, I'm sorry, with respect to x, where x is the number of items or goods produced. Okay beta? Okay, so that is the marginal cost. Then after the marginal cost we get the revenue and the profit function. Revenue क्या होता है बेटा? Revenue is the price of one article at which you sell multiplied by number of articles. देखो बेटा, now suppose ये मैं बनाता हूं ये मोबाइल, one mobile cost rupees 10,000 और मैं उसको बेच रहा हूं 15,000 में. अब 15,000 में मैंने एक मोबाइल बेचा, ऐसे 10 मोबाइल बेचे तो मेरे हाथ में कितने आएंगे? 1,50,000. अब ये 1,50,000 क्या मेरा प्रॉफिट है क्या? नो. ये पैसे मेरे हाथ में आते हैं लेकिन उसमें से खर्चा जाने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो जो पैसे मेरे हाथ में आ रहे हैं दैट इज द रेवेन्यू. तो रेवेन्यू क्या आता है बेटा? रेवेन्यू इज नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस. RX इज द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट्स. कितने बेचे बेटा? X यूनिट्स बेचे. Then the derivative R dash of X, मतलब revenue of derivative rate of change of derivative with respect to number of items is called as the marginal revenue. And total revenue क्या है? The total revenue is R is equal to P into D, where P is the price and D is the demand. So the average revenue will be R upon D, which is total revenue कितना है? P into D divided by D, that is the demand. D gets cancelled, average revenue is nothing but the price. And the total profit, अपने को पता है बेटा, profit क्या होता है बेटा? Selling price minus cost price, मतलब revenue minus the total cost, right? Okay, so this completes the formula. Now we can go for the exercise, that is exercise number 9.2. differentiate तो हो गया है अपना. Solve the following, the second question. No, first have to solve the derivatives, right? 9.1 हुआ है, 9.2 नहीं हुआ है. Okay, differentiate the following functions with respect to x. The first is x upon x plus 1. Exercise number 9.2, the first question and the first one, differentiate, उसको y बोलेंगे अपन, x upon x plus 1, correct? X upon x plus 1. So we have to use the quotient rule here. क्या करेंगे? quotient rule. This is your u, this is your v. तो derivative of u upon v आपको पता है बेटा, v du by dx minus u dv by dx upon v square. तो एग्जाम में क्या करेंगे बेटा? अपन जो फॉर्मूला है उसको, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? वी कैन राइट यूजिंग दैट फॉर्मूला. फॉर्मूला लिखो एंड यूजिंग भी लिखो, करेक्ट? ओके, तो अब देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? v एज इट इज. v क्या है बेटा? v इज द डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर. अपॉन क्या बेटा? v स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0 अपॉन v स्क्वायर. v स्क्वायर क्या है बेटा? x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. यहां पर भी अपन उसको x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो ये कितना आएगा? x प्लस 1 इंटू 1 इज x प्लस 1 माइनस x upon x plus 1 bracket square. X will get cancelled and we get this answer as 1 upon x plus 1 bracket square dy by dx. So the derivative of x upon x plus 1 is 1 upon x plus 1 square, right friends? Okay, let's move to the next one. अगर नहीं समझा है you can comment बेटा.
right? Okay, let's move to the next one. X square plus 1 upon x. The second one is x square plus 1 upon x. इसको दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा. x डिनोमिनेटर अपन दोनों को दे सकते हैं. ओके, मतलब ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. सेपरेट करेंगे बेटा इसको. सो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. और अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाता है. सो जो सिंपल मेथड जो है वो मैंने पहले बता दी है. x का डेरिवेटिव पता है अपने को 1. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1. और 1 अपॉन एक्स का क्या है बेटा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. कल अपन ने इसको डिराइव किया था, राइट? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? ओके, so this is your derivative. dy by dx is equal to 1 minus 1 upon x square. ओके, अपन इसको डेरिवेटिव वाले रूल से भी कर सकते हैं. कैसे? uv रूल से. सो dy by dx will be v क्या है बेटा? x into डेरिवेटिव ऑफ x square plus 1 minus x square plus 1 into derivative of x divided by what? X का square, correct? Okay, so what we get here? X will be as it is. x square का डेरिवेटिव 2x, 1 का तो 0 ही आएगा बेटा, बराबर है कि नहीं? माइनस x square plus 1 और x का डेरिवेटिव 1 है. so what upon x square? तो कितना आएगा देखो बेटा, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता बेटा? 1x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं. सो दैट वी सी कि दोनों भी जो आंसर है वो सेम है. क्या हो सकता है बेटा? दोनों को अलग अलग करेंगे अपन. x square get cancelled, so it will be 1 minus 1 upon x square, which is same as before. Okay, which is same as before. Now let's move to the next one, the third one. 1 upon e raised to x plus 1. The third one is y is equal to 1 upon e raised to x plus 1. Okay, now अब अगर अपने को इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे बेटा? dy by dx is equal to e raised to x plus 1 into derivative of 1 minus 1 into derivative of e raised to x plus 1 divided by e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब डेरिवेटिव 1 कितना है? 1 का डेरिवेटिव कितना बेटा? बोलो मुझे नहीं आता है. करेक्ट, इट इज 0. इट इज 0. कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है. माइनस, अब देखो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x और 1 का डेरिवेटिव कितना है बेटा? 0 अपॉन e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बेटा. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म वुड बी 0. ये आएगा माइनस e raised to x अपॉन e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर dy by dx. राइट बेटा? ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क, राइट? ओके, then we come to e raised to x upon e raised to x plus 1, the fourth one. पहले 1 था in the numerator, now we have e raised to x in the numerator. ओके, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा देखो बेटा. dy by dx u upon v से है तो यूजिंग करें. ओके, we'll write down the formula is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square.
करेक्ट। ओके, तो dy बाई डी एक्स विल बी कितना, देखो बेटा, v स्क्वायर मतलब e रेज टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। ऊपर क्या आएगा बेटा, v एज इट इज मतलब e रेज टू एक्स प्लस 1 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स प्लस 1। करेक्ट। ओके, अब देखो बेटा यहां पर ये आएगा e रेज टू एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स कितना है बेटा, यस सबसे आसान है e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम रहता है बेटा, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। नीचे आएगा e रेज टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, e रेज टू एक्स का स्क्वायर, e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स का स्क्वायर अपॉन e raised to x plus 1 bracket square. E raised to x square will get cancelled and we get e raised to x upon e raised to x plus 1 bracket square dy by dx is equal to, करेक्ट बेटा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से अपन डेरिवेटिव्स निकाल सकते अगर आपके बेसिक्स क्लियर है बेटा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो 12th में भी आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, x अपॉन log x। अगर आपको नहीं समझा आप मुझे कमेंट करो बेटा, मैं वापस पीछे जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन ये क्या है बेटा, वी हैव टू यूज द क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v। Using derivative of u upon v is equal to what, v du by dx minus u dv by dx upon x square। तो क्या आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, v क्या है आपका log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस u एज इट इज, u क्या है बेटा आपका, u है x, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन x का स्क्वायर, सॉरी log x का स्क्वायर, आई एम सॉरी log x का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डालो बेटा, बिकॉज देखो बेटा log ऑफ x स्क्वायर एंड log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर ये दोनों का मतलब अलग है, दे आर नॉट इक्वल। यहां पर क्या होता है बेटा, x का स्क्वायर लेते हैं उसका log लेते हैं, जबकि यहां पर log x निकालने के बाद उसका स्क्वायर लेते हैं, मतलब दिस इज log x इंटू log x और ये log ऑफ x इंटू x है, राइट। ओके, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी log ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x, log x का डेरिवेटिव क्या है बेटा 1 अपॉन x और log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, x विल गेट कैंसिल, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी dy बाई डी एक्स विल बी log x माइनस 1 अपॉन log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, खत्म, फिनिश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 2 raised to x upon log x, 2 raised to x upon log x, I don't know the number, log x, again क्या है बेटा, the quotient rule। मैंने बोला है आपको हर बार फॉर्मूला लिखो तब आपका लर्न हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या है बेटा, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो व्हाट इज योर v, v इज log x into derivative of e raised to 2 raised to x, I am sorry, minus 2 raised to x into derivative of log x upon v square, मतलब
log x का स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट ना बेटा? ओके, तो ये कितना आएगा? योर dy by dx will be log x into 2 raised to x log of 2 minus 2 raised to x, log x का डेरिवेटिव 1 upon x divided by log x ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? नाउ 2 raised to x को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आएगा? log x log of 2 minus 1 upon x divided by log of x bracket square. Okay, that's all. You can cross multiply it. करना है तो करेंगे, नहीं किया तो भी चलता है बेटा, right? So I am not given you any time to write down or gather what we have done. तो मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं बेटा, अभी आप देख लो, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क. I'll give you 10 seconds, तब तक आप लिखो. है ना? नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हो आप. Okay, I hope you have noted it down and you have understood it as well. So let's move to the next one. Yes, अपन ने 6 नंबर था बेटा, अपन ने 5 दिया था. 2 e raised to x minus 1 upon 2 e raised to x plus 1. ओके, दिस इज व्हाट u अपॉन v अगेन. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव विल बी डिनोमिनेटर एज इट इज. इस बार पहली बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं. डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर मतलब 2 e raised to x माइनस 1, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज derivative of the denominator divided by denominator bracket square, right? Okay, v square. तो ये क्या आएगा देखो, this will be 2 e raised to x plus 1 as it is. इसका देखो बेटा डेरिवेटिव 2 as it is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x और 1 का 0 माइनस 2 e raised to x minus 1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 e raised to x का e raised to x, करेक्ट, और 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2 e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो बेटा 2 e raised to x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या आता है बेटा? 2 e raised to x plus 1 minus 2 e raised to x plus 1 अपॉन 2 e raised to x plus 1 bracket square, correct? Okay, 2 e raised to x will get cancelled, 1 and 1 2 into 2 is 4 e raised to x upon 2 e raised to x plus 1 bracket square. So this completes this problem also. I'll give you some time again to note it down and gather. Okay beta, let's move to the next one. That is the 8th one, the last one of this problem. X plus 1 x minus 1 upon e raised to x plus 1. 8th one देखो बेटा, y is equal to x plus 1 x minus 1 upon
e raised to x plus 1. ओके ओके, अब देखो बेटा न्यूमरेटर को अपन अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज a plus b a minus b मतलब a square minus b square, that is x square minus 1. Divide this by e raised to x plus 1. Now this is again u and v. What we do? Using derivative of u upon v is equal to v as it is, formula लिखना है बेटा, not the answer. v as it is du by dx minus u dv by dx divided by what? the v square. बराबर ना, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है अपने को dy by dx as v कितना है आपका e raised to x plus 1 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस u कितना है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x plus 1 डिवाइड बाय v स्क्वायर मतलब e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये कितना आएगा e raised to x plus 1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 e raised to x का e raised to x एंड 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये कितना आएगा देखो बेटा, we can multiply 2x e raised to x plus 2x minus x square e raised to x plus e raised to x, correct, upon e raised to x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब कुछ कॉमन करके कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट. ओके, वी विल लीव दिस एज इट इज. इतना लिख के लो, then we can go to the next one because this first question now is over. We will move on to the next question. Done beta? Okay, then now let's move on to the second question. Second question देखो बेटा, solve the following example. The demand D for the price P is given as D is equal to 27 upon P. D कितना है बेटा 27 upon P. Find the rate of change of demand when the price is 3. Okay, okay. अब देखो बेटा सबसे पहले तो उसने दिया है डिमांड D is equal to 27 upon P. तो अपने को चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब डी डी अपॉन डीपी. इसका मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए अपने को 27 अपॉन पी का. तो देखो 27 तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन पी का डेरिवेटिव क्या है बेटा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, करेक्ट. अब उसने बोला है डेरिवेटिव ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 6. प्राइस कितना है बेटा व्हेन द प्राइस इज 3 नॉट 6. व्हेन द प्राइस इज 3 मतलब p के जगह अपन 3 का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर. दिस इज माइनस 27 अपॉन 9, सो इट इज माइनस 3. डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस व्हेन योर प्राइस इज 3. इस तरीके से फाइनल आंसर अपने को मिल जाता है. Right? Okay, let's move the second one. If for a commodity the price demand relation demand is equal to P plus 5 upon P minus 1, find the marginal demand when the price is 2. Okay, अब डिमांड है P plus 5 P minus 1. We have to find the marginal demand. अब marginal demand अपने को पता है बेटा marginal demand dm is equal to derivative of demand with respect to price. मार्जिनल डिमांड मतलब क्या बेटा कि प्राइस अगर 1 रुपए से बढ़ती है तो डिमांड क्या होगा, प्राइस अगर 1 रुपए से घटती है तो डिमांड का क्या होगा.
तो ये कितना आएगा बेटा, मार्जिनल डिमांड, डीएम नहीं चाहिए बेटा, ये एमडी चाहिए, मैड एमडी इज इक्वल टू, अभी ये क्या है बेटा, यू अपॉन वी से होगा, यू अपॉन वी से, नीचे क्या आएगा बेटा, वी स्क्वायर पी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बेटा, p minus 1 as it is derivative of p plus 5 minus p plus 5 as it is derivative of what beta, p minus 1, that is the denominator. So what we get, p minus 1 as it is, p का derivative 1 है, 5 का 0, minus p plus 5, p का 1 इसका 0 divided by p minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा p minus 1 माइनस p minus 5 अपॉन p minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, p minus p get cancelled, minus 1 minus 5 that is minus 6 upon p minus 1 bracket square. This is the marginal demand, correct, this is the marginal demand. अब उसने बोला है फाइंड द मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज 2, व्हेन द प्राइस इज 2, सो द मार्जिनल डिमांड व्हेन p इज 2 minus 6, 2 minus 1 square, minus 6 upon 1 का square, that is minus 6. So this is the marginal demand when the price is 2. Okay friends, I'll give you some time to write it down. आप कमेंट करो बेटा, समझा या नहीं समझा, नहीं समझा अपन वापस पीछे जा सकते हैं, कोई डरने की बात ही नहीं है बेटा. ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन and you have understood it also. Let's move to the next question, the third one. The demand function of the commodity is p is equal to 20 plus d minus d square. Find the rate at which price is changing when the demand is 3. Demand is 3. अब यहाँ पर price is dependent on the demand, 20 plus d minus d square is the question number 3. So rate of change of price with respect to demand, इस बार उल्टा है बेटा, हमेशा अपन ने rate of demand with respect to price देखा था, यहाँ पर rate of price with respect to demand कर रहे हैं. 20 का डेरिवेटिव 0, d का कितना 1, 2d का d square का 2d. Now the price is changing when demand is how much? Demand is 3. तो कितना आएगा बेटा, 1 minus 2 into 3, that is 1 minus 6 minus 5. So the price will change at 5 rupees when demand changes, when the demand is 3. नेगेटिव मतलब क्या होगा बेटा, जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम होगा, राइट. ओके, नेक्स्ट. If the total cost is given by C is equal to 5x cube plus 2x square plus 7, find the average cost and the marginal cost when x is 4. C is 5x cube plus 2x square plus 7. We have to find the marginal cost and the average cost when x is 4. तो सबसे पहले अपन करेंगे एवरेज कॉस्ट. इट इज गिवन बाय सी ए, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज क्या आएगा, सी अपॉन एक्स, दैट इज पर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट. कितना आएगा बेटा ये, दिस विल बी 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x, राइट. तो एवरेज कॉस्ट विल बी, देखो बेटा 5x क्यूब अपॉन x मतलब 5x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन x इज 2x प्लस 7 अपॉन x.
अब उसने बोला है when average cost and the marginal cost both when x is 4, when x is 4. तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, एवरेज कॉस्ट व्हेन x is 4. x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, 4. ओके, सो 4 का स्क्वायर 16, 5 आर 80, 4 2 आर 8, 7 divided by 4 is 1.75, that is 89.75 is the average cost when 4 units are produced. तो एवरेज कॉस्ट इतना आता है बेटा, राइट. ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट देखना है. मार्जिनल कॉस्ट कितना है, marginal cost will give by CM, it is derivative of cost with respect to x. तो ये कितना आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव कॉस्ट का 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 3, इसको मल्टीप्लाई होगा मतलब 15x स्क्वायर प्लस क्या बेटा 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4x और 7 का 0. ओके, नाउ द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 15 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 0, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 इंटू 15 कितना आता बेटा 240, करेक्ट, 160 एंड 80 plus 16 which is 256, that is the marginal cost when x is 4. Okay, and the average cost is again when x is 4 comes out to be 89.75. So it is not necessary that the marginal cost and the average cost are near about each other. There may be a lot of difference. Okay, let's move to the next one. The total cost function of producing n notebooks is given by 1500 minus 75n plus 2n square plus n cube upon 5. Find the marginal cost when n is 10. Marginal cost find करना है बेटा when n is 10. Okay, so the cost is 1500 plus कितना बेटा minus 75n plus 2n square plus n cube upon 5 plus n cube upon 5, right? And we have to find the marginal cost. CM क्या रहता है, derivative of cost with respect to n number of items. 1500 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 75 इंटू n, n का डेरिवेटिव 1, ये कितना आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई होके 4n प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 5, n क्यूब का डेरिवेटिव 3n स्क्वायर अपॉन 5, करेक्ट. ओके, नाउ मार्जिनल कॉस्ट व्हेन n इज, n कितना बेटा 10 माइनस 75 प्लस 4 इंटू 10, n की जगह अपन सिर्फ 10 को सब्सटीट्यूट करना, 3 इंटू 10 into 10 upon 5 minus 75 plus 40, ये कितना है बेटा 3 to the 6 10 है, so 100 minus 75, that is 25. So the marginal cost when 10 items are produced is 25. Okay friends, okay, so with that this chapter, no, I said that this chapter was over. No, it's not yet. बहुत सारे questions है अभी. I'm sorry for that. Now before we go to the next question, ये फॉर्मूले देखो बेटा, you have to write down all this formula एक बार वापस, कल लिखे हैं एक बार वापस लिखने हैं आपको.
x रेस टू n का डेरिवेटिव पता है आपको कितना है, n x रेस टू n माइनस 1. x का डेरिवेटिव 1 है, 1 अपॉन x का है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. रूट एक्स का क्या है बेटा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, log x का है 1 upon x, right? Okay, so let's go for the sixth one. The total cost T toy cars is given by 5 into 2 raised to T plus 17. Find the marginal cost and the average cost when T is 3. Okay, okay. Total cost is given by C is equal to 5 2t plus 7. Cost is equal to 5 2 raised to t plus 7 और उसने बोला है to find 17 है बेटा मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट करेंगे. मार्जिनल कॉस्ट क्या रहता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स विच इज टी. अब 5 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 2 रेस टू टी का डेरिवेटिव अपने को पता है बेटा a रेस टू एक्स डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. तो ये क्या आएगा 2 रेस टू टी इंटू लॉग ए की जगह 2 है और 17 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. तो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन t इज कितना बेटा 3. 5 इंटू 2 क्यूब इंटू लॉग 2. 2 का क्यूब 8. 8 फाइदार 40 log 2 will be the marginal cost when t is 3. Now the average cost when t is 3 कितना आएगा, it is cost divided by t. कॉस्ट कितना है 5 इंटू 2 रेस टू टी प्लस 17 अपॉन टी. तो द एवरेज कॉस्ट व्हेन टी इज कितना बेटा 3. 5 2 क्यूब प्लस 17 अपॉन कितना बेटा टी दैट इज 3. 2 का क्यूब 8 5 40 एंड 15 57 upon 3 that is 19. एक स्टेप बढ़ाएंगे बेटा अपन 5 इंटू 8 प्लस 17 अपॉन 3 40 प्लस 17 57 अपॉन 3 विच इज 19. हाँ बेटा शाम से ना कुछ पूछना चाहते हो आप, क्या पूछना चाहते हो बोलो बेटा, यू कैन कमेंट. यस शाम से ना बोलो बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू. You want to ask any doubt, you can. Seventh one देखो बेटा, the seventh one, if for a commodity the demand function D is 75 minus 3p. Find the marginal function when p is 5. When p is 5, d is 75 minus 3p. d is 75 minus 3p. Now to find the marginal demand अपने को क्या चाहिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू p. 75 का 0 आएगा माइनस 3 p का डेरिवेटिव 1. सो योर मार्जिनल डिमांड विल बी माइनस 3. इट इज कांस्टेंट वॉट एवर बी द प्राइस, द डिमांड इज कांस्टेंट. ओके, सो यहां पर द डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइस. अभी उसने जानबूझ के 5 दिया है, बट द मार्जिनल डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइस. Let's move to the 8th one beta. The total cost of producing
x units is given by c is equal to 20 e raised to x. Find the marginal and the average cost when x is 4. c कितना है बेटा? 20 into e raised to x. Now for the marginal cost, we know it is the derivative of cost with respect to number of items. 20 constant है, e raised to x का derivative e raised to x. बोलो बेटा, बोलो शाम से ना. Now the marginal cost when x is कितना बेटा? You can ask it out. The cost is 4 दिया है बेटा. Cost is 4. कितना आएगा? 20 into e raised to 4. अब इसका अपने को कोई भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है. You can keep it as it is. Okay. Now the average cost is given by total cost divided by number of items x. So it is 20 e raised to x upon x. Correct? So the average cost when x is 4 कितना आएगा? 20 e raised to 4 upon 5. That is 4 e raised to 4. Right friends? Okay. It is as easy as this one. Let's move to the ninth one. The demand function is given as p is equal to 175 plus 9d plus 25d square. Find the revenue. ये demand है बेटा. The average revenue and the marginal revenue when the demand is 10. p देखो बेटा, p is 175 plus 9d plus 25d square. So we have to find the revenue, average revenue and the marginal revenue when the demand is 10. When the demand is 10. अपने को पता है बेटा, revenue जो है it is p into d. revenue कितना रहता है बेटा? p multiplied by t. तो ये कितना आएगा बेटा? revenue will be 175 plus 9d plus 25d square into d. So what I get? 175d plus 9d square plus 25d cube. This is your revenue. अब उसने बोला है to find revenue, average revenue and the marginal revenue. So now revenue when demand is 10. When the demand is 10 कितना आएगा? 175 d के जगह 10 डाल देंगे अपन प्लस 9 10 का स्क्वायर 25 इंटू 10 का क्यूब. तो दिस विल बी 1750 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9 900 10 का क्यूब 1000. इट विल बी 25,000. तो जब ऐड करेंगे 50 ओके ये 16 1 carry 27,650 will be the revenue when demand is 10. अब अपने को निकालना है the average revenue. Average revenue कैसे आता है बेटा? revenue divided by number of articles, that is d दिया है यहाँ पर. r कितना है देखो बेटा, r is 175 d कॉमन ले लेंगे अपन पहले ही. 175 plus 9d plus 25d square okay upon d. d gets cancelled. So the average revenue when d is 10 will be 175 plus 9 into 10 plus 25 into 100. It is 175 plus 90 plus 2500. तो कितना आएगा? 2765. Okay, will be the average revenue. Finally, he has asked us for the marginal revenue also. Marginal revenue क्या है बेटा? Derivative of revenue with respect to demand. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा देखो बेटा? रेवेन्यू का
175 डी का 1 आएगा, 175 इंटू 1 प्लस देखो बेटा ये क्या आएगा 2, इसको आगे मल्टीप्लाई 18 डी एंड 75 डी स्क्वायर, right? Now we just have to substitute d is equal to 10, 175 plus 18 into 10 plus 75 into 10 का square, 175 180 7500. ओके अब ये देखो ये 350 आता है, मतलब 7855 will be your what बेटा 7855, करेक्ट. ओके एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा बेटा, एवरेज रेवेन्यू विल बी 2765, राइट. ओके एंड the revenue will be, revenue कितना है बेटा 27650. This will be the total revenue. This is the required answer. Correct बेटा. Okay. Okay, let's move to the next one. I hope you have understood this. नहीं समझा, you can ask. The 10th one, the supply at a price P is given by P square plus 9P minus 2. Find the marginal supply when the price is 7. Supply is P square plus 9P minus 2. We have to find the marginal supply. अब marginal supply के लिए क्या है बेटा, marginal supply is derivative of supply with respect to price. कितना आएगा बेटा 2P plus 9. और उसने बोला है बेटा marginal supply when the price is कितना बेटा, when the price is 7. कितना आएगा 2 into 7 plus 9, 14 plus 9 that is 23. Correct? Correct? Okay. Now once we get this, we go to the 10th one. तो कितना है बेटा, marginal supply is 23 when P is 7. The last one, the cost of producing X articles is given by C is equal to X square plus 15X plus 81. Find the average and the marginal cost. Find the marginal cost when X is 10. Find X for which marginal cost equals the average cost. Okay, तो सबसे पहले cost x square plus 15x plus 18 1. Okay, x square plus 15x plus 81. तो सबसे पहले we will find out the marginal cost. Marginal cost कितना आएगा बेटा, derivative of cost with respect to x, 2x plus 15. करेक्ट. ओके तो ये कितना आएगा, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज 10 कितना आएगा 2 into 10 plus 15 that is 35. मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x is 10. द एवरेज कॉस्ट भी बोला है बेटा उसने, एवरेज कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट अपॉन x, x square plus 15x plus 81 divided by x. Okay, एंड फाइनली एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बोला है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ये भी बोला है.
फाइंड x फॉर विच द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल. कॉस्ट फंक्शन बोला है बेटा, कॉस्ट फंक्शन ये आएगा एंड द वैल्यू ये आएगी. दिस इज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. ना इफ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2x plus 15 will be x square plus 15x plus 81 divided by x. If we cross multiply it, 2x square plus 15x is equal to कितना बेटा, x square plus 15x plus 81. सबको इधर लेके आएंगे बेटा अपन. 2x square plus 15x minus x square minus 15x माइनस इक्वल टू 81 रखेंगे बेटा, नंबर्स को वही रखेंगे. अब क्या होगा देखो, माइनस 15x प्लस 15x विल गेट कैंसिल. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 81. x कितना आएगा, प्लस n माइनस 9. लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव रह सकते क्या बेटा, नहीं रह सकते. देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एज number of articles cannot be negative. ठीक है बेटा. With that this chapter is over, derivative का. Right friends? Okay. In the next lecture we'll start with a new chapter. Till then, bye friends.